Hello guys, this is your KP sir, Krishna Prakash. So your GATE 2023 exam is over. From 2023 GATE examination, what you have to learn, what are the mistakes you did, from those mistakes what you have to learn. Because we can say learning from mistakes is a stepping stone of success. So mistakes कभी कभी होना चाहिए. ये मिस्टेक्स होने के बाद ये समझ हो जाएगा क्या मिस्टेक है, क्या करेक्ट है, क्या गलत है, क्या परफेक्ट है. ये सोचने के बाद आइडेंटिफाई द मिस्टेक, करेक्ट इट. द टॉप रैंकर्स, the scientists who succeeded in their experiments, and the successful people in life, whoever may be, those people succeeded in life, succeeded in experiments, succeeded in exams only by learning from mistakes. Mistakes से सीखना पड़ेगा. So what are the things you need to learn from the mistakes done in GATE 2023? So आज का सेशन इनका बारे में. So देखो what exactly went wrong. आपका एग्जाम में क्या गलत किया, exactly what went wrong, identify it. किसका चेंज करना पड़ेगा, what to change, what exactly went wrong and what to change, what you have to make over yourself. ये गलत का कारण में चेंज कैसा होना चाहिए, what makeover you must do to overcome in the upcoming exams. एग्जाम्स कभी कभी आएगा, कभी कभी हो जाएगा, बट मिस्टेक्स रिपीटिशन मत होना चाहिए. So those who are not going to learn from mistakes never be succeeded in life. So when you are studying, so ये ध्यान से सुनो, when you are studying concepts, you are studying concepts from theory. ये देखो, from theory, how much you learn from theory, from concepts, from the class, only this much you learn. You are practicing questions, you are solving questions, and while doing the practice and revision, this much you learn. By practice, by learning concept, so this is by learning concept, this is by practice. So ये देखो, this is from theory, and then after theory होने के बाद this much is from practice. So from theory, from practice, but learning from mistakes. ये देखो from mistakes. अरे इतना ज्यादा सीखा आप. You are going to learn this much extra if you are going to learn from mistakes. So how much you learn from mistakes? Total this much you are going to learn from mistake. इतना ज्यादा हो गया. देखो, सो बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए. वाइल डूइंग प्रैक्टिस, वाइल डूइंग रिविजन थोड़ा सा गलत हो जाएगा. ये गलत होने के बाद इंप्रूवमेंट होना चाहिए. So it is very very important for you to know what mistakes you did in GATE 2023 exam to overcome upcoming ESC examination, SSC JEE examination, or else those who are preparing for GATE 2024. So those students who are again appearing for GATE 2024 and ESC 2024 also, they must know what are the mistakes did. So examine yourself. आप खुद से आपको एनालाइज करना चाहिए. Honest analysis होना चाहिए. So generally people used to throw blame
थ्रो फेल्यूर टू XYZ। अरे XYZ का बारे में आपका एग्जाम का फेल्यूर, आपका जिंदगी का फेल्यूर ब्लेम मत करो। आपसे एग्जामाइन, एनालाइज यूर एग्जाम, यूर सेल्फ एनालाइज करो। कैसा एनालाइज करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू कंप्लीटेड द फुल सिलेबस? फ्रॉम द कंप्लीटेड सिलेबस, हाउ many times you revised? How many mock tests you have written? How many number of questions you practiced? Is the sufficient time given for complete solving of classroom notes question? So एक बार भी कर दिया क्लासरूम क्वेश्चन और 2 बार 3 बार 4 बार नहीं कर दिया। So write on a paper, out of 100 marks, what are the completed subjects, what are incomplete subjects? पूरा 100 मार्क्स में एक लिस्ट बनाओ। कॉलम 1 में कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स, कॉलम 2 में इनकम्प्लीट सब्जेक्ट्स। सो आउट ऑफ 100 यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मेनी? जस्ट मेक ए नोट। बेस्ड ऑन दैट, हाउ मेनी मार्क्स you prepared and how many marks you are getting. So your performance index, that is called your own performance index. आप पूरा 100 को 100 मार्क्स का बारे में सिलेबस खत्म नहीं हो गया और यू आर गोइंग टू कंसिडर रे में फेल हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड, if you are not yet finished the 100% syllabus, how you failed? You first finish the total 100% syllabus, attempt all 65 questions, ready to attempt all 65 questions, then think about whether you are going to fail in the exam, you are going to pass in the exam. syllabus भी नहीं खत्म हो गया, so आपका individual analysis होना चाहिए. Analyze yourself. So after making the list, I told you to make a list. Completed subjects, incomplete subjects. Again completed subjects में weak subjects क्या है, strong subjects क्या है. अभी क्या करेगा, ये वीक सब्जेक्ट्स एंड इनकम्प्लीट सब्जेक्ट अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप पहले प्रिपरेशन होना चाहिए. वॉट एवर नॉट एट फिनिश्ड, whatever finished but you are weak in solving those questions, these two are your target to start first, so that you can convert your weakness into strength. हमारा पहले टारगेट क्या हो रहा है अभी? हमारा पहले टारगेट कन्वर्टिंग वीकनेस टू स्ट्रेंथ. हमारा वीकनेस बिकम स्ट्रेंथ. और एग्जाम भी लिख दिया आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी मालूम हो गया, कौन सा एरियाज में एग्जाम में कोई वीक हो गया. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी दे आर वीक इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. सो अभी 2024 को प्रिपेयर करने वाला अभी शुरू करो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से शुरू करो. इफ योर बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आर स्ट्रांग, you become strong in fluid mechanics because we have integration, differentiation in fluid mechanics. You become strong in hydrology, probability statistics required in hydrology. You become strong in all structural subjects if your engineering mathematics skills are good. So what mistake you did in the last year while preparing engineering mathematics, overcome that mistake, identify the mistakes what you did. Then first of all you do start preparing with engineering mathematics. So convert your weakness of maths into your strength, strongness. And second thing, concepts. Because we have so many MSQs, इतना ज़्यादा concepts से आ गया theory. We are solving gate का बारे में ज़्यादा numerical solve किया, but theory questions बहुत कम solve किया. MSQ सिर्फ थियरी से आए, कॉन्सेप्ट से आएगा. सो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट थियरिटिकल क्वेश्चंस का बारे में. सो यूज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन PYQs 1 2 3 करेक्ट, 1 3 करेक्ट, 1 4 करेक्ट, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन ESC. यूज देम टू प्रिपेयर फॉर GATE MSQs. So the two weakness the students faced in 2023 examination, first one is math,
second one is MSQ. So your first target is to overcome the fear of math, second target is to overcome MSQ fear by learning concept wise. So turn your weakness, convert your weakness into strength, weakness to strength. This is the people who want the success. They are going to do first, they are going to identify their weakness and converting the weakness into strength. कौन सा चीज में, कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा एक्टिविटी में आप वीक होगा, पहले स्ट्रांग बनाओ, आपको मार्क्स आसान से मिल जाएगा. ये अच्छे से सुन लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. व्हाट इज दिस? अरे बाबा सिलेबस नहीं खत्म हो गया. 100% सिलेबस खत्म नहीं हो गया अभी तक. If you have not yet finished the entire syllabus, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो गया, unfinished syllabus. So you are going for a all India level examination by preparing 50% and 60%. So genuinely, honestly, आपको खुद से क्वेश्चन करो. Please, no one is going to question you. You yourself only question. Is it correct? Writing an all India level examination, the student strength 1 lakh students are appearing without completing total 100% syllabus. Just by completing 50 to 60% syllabus, you are attempting the exam. Okay, good. You are capable because you prepared for since last 6 months, 7 months only, you prepared only 60%. अरे आप 60% मार्क्स, 60 मार्क्स को प्रिपरेशन हो गया. ये 60 में आपको 45 आ रहे, देन वाई यू आर वरीइंग? 60 में 45 मार्क्स आ रहे मींस 80 to 85% हो गया आपसे, और 75 to 80% आपको आ गया. समझ आ रहा है आपको? देन इफ यू प्रिपेयर फॉर 100%, आपको 75 मार्क्स मिलेगा ना. सो दैट व्हाट एवर अनफिनिश्ड सिलेबस फॉर 23 गेट, make to be finished for 24 gate. So you start with incomplete subjects in the 2023 gate, so that will help you to cope up, to make return back strong in 24 gate. I repeat guys, unfinished syllabus, आप 60% 50% सिलेबस खत्म करके 23 गेट दिया. Now your target is, जनरली वी स्टार्ट अगेन विथ अवर फेवरेट सब्जेक्ट. ऐसा मत करो, फेवरेट सब्जेक्ट से रिस्टार्ट मत करो. कोई सब्जेक्ट नहीं खत्म हो गया अभी तक. कोई सब्जेक्ट में आपको डाउट था, कॉन्फिडेंट नहीं था, ये सब्जेक्ट से प्रिपेयर करो, सो दैट यू कैन गिव स्ट्रॉन्ग कम बैक फॉर गेट 2024 प्रिपरेशन. समझ आ रहा है? एंड यूर टारगेट क्या है? आपका टारगेट बताओ, आपका टारगेट क्या है? So I am giving you the target by August 2023 end. आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए. That is your target. August 2023 is the best month to finish your syllabus. Total 100%. 5 months are there then for revision, question solving, online mock test writing, everything to prepare for 2024. I am talking about second time learners. First time learners you can go up to October end or November. Second time learners, already those whose 50% or 60% syllabus completed, you can finish the remaining syllabus along with the revision of the previous syllabus. पूरा ये खत्म होने के लिए अगस्त एंड तक टाइम ले लो. इधर एक काम करो, along with studying new subjects, सैटरडे एंड संडे ओल्ड सब्जेक्ट को रिवाइज करो. मंडे में एक टेस्ट लिखो ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स को, so that already completed subjects are in touch with your brain. They won't go anywhere. For example, generally students are preparing environmental, geotech, aptitude, transportation, math. Now you are started with for 2024 FM and strength of material. For example, I am saying
वीक डेज मंडे टू फ्राइडे एफएम एसओएम प्रिपेयर करो. वीकेंड सैटरडे संडे ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड ना. दोज कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स सैटरडे एक सब्जेक्ट, संडे एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करो. वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू रिवाइज्ड इन सैटरडे संडे मंडे इनका बारे में ऑनलाइन टेस्ट लिखो. So that already completed for 2023 is in your brain and they are continuous contact with you. Revision chalega. Whichever new subjects you are going to prepare from Monday to Friday weekdays में syllabus खत्म हो जाएगा. By this make your plan till August. By August end आपका syllabus खत्म होना चाहिए. 5 months are there. For what purpose? Revision. 3 times you can do revision if you end the syllabus by August. Then online mock test, solving more and more and more questions. For that, sufficient time will be there for GATE 2024. Yes, as I known from most of the students, from the messages of most of the students, sir, we have not practiced with virtual calculator. We practiced with scientific calculator or mobile calculator, normal mobile calculator. Directly we went to GATE exam and there we started using virtual calci. We got so much difficulty. So please understand this point. आप GATE exam में virtual calci use करके सॉल्व होना चाहिए. आप क्लास में अटेंड करने का टाइम पे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम पे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखने का टाइम पे भी वर्चुअल कैल्सी डाउनलोड करके मोबाइल में ये भी यूज करना चाहिए. सो योर प्रैक्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. while you are attempting the subject in the class, while you are solving online mock test, while you are solving numerical questions, practicing numerical questions in your notes, anytime don't use scientific calculator, don't use mobile calculator. Sorry. Download virtual calci, use that virtual calculator only. So खुद से अभी से शुरू करो practice virtual calci, so that you must become expert in virtual calci in GATE 2024. So we feel that अरे बाबा 1 year is there, we can prepare the virtual calci last 1 month. Last 1 month में टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस मिलेगा, हम भूल जाएगा virtual calci practice. So many videos are there in YouTube how to use virtual calculator for GATE. अभी सीखो कैसा करेगा, how to make to practice with virtual calci. Here onwards, the GATE aspirants don't use any other calci other than virtual calci. Around 40 to 45 students told me, we failed to use virtual calci, take a long time, it become more complicated to us. So please understand the difficulty in using virtual calci directly in the exam. Now itself you use the virtual calci, that will help you a lot. Practice the virtual calci a lot before GATE 2024. अभी से शुरू करो. Yes, for any top ranker, for any exam to enter, to get into top 100, top 10, top 50, writing mock test. Online mock test is going to play very big role in your success. Online mock test नहीं लिख दिया, डायरेक्टली एग्जाम में चल गया, क्या हो गया बताओ? टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो जाएगा. यू नो द क्वेश्चन, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द फॉर्मूला. 6 घंटा देने के बाद पूरा 65 क्वेश्चन हो जाएगा. But the one who solved in 3 hours, those only will be rankers. The one who not at all solved in 3 hours, not at all ranker. That practice of time management, that completing the question within the given 3 minutes, 2 minutes or 4 minutes, that is possible. And identifying the weak areas, identifying the silly mistakes, that is possible only when you write online test. Yes, most of the students told me, sir, when we are writing online mock test, we are getting negative marks, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, हम डिमोटिवेट हो रहे. डिमोटिवेट होने का कारण में ऑनलाइन मॉक टेस्ट छोड़ो मत. प्लीज डोंट लीव ऑनलाइन मॉक टेस्ट by considering demotivation. You are writing online mock test for practice,
for time management, for revision purpose, to know about silly mistakes. But worrying about coming less marks, you are not writing for marks purpose. You are writing online mock test as a rehearsal, practice purpose, not for marks purpose. So that mistake what you did in 2023, don't repeat. Write online mock test har ek week here onwards, because already you finished 50% syllabus. So those who are appearing for 24, who already prepared for 23, you can start now itself writing online mock test. And those who are first time preparing 24 students also, for the completed subjects अभी शुरू करो, आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट अच्छा हो जाएगा. Practice makes any student perfect. Not only men, women also perfect. Generally we have practice makes men perfect. Not only men, women also perfect. Every student will be perfect after making practice. That practice you can get from online mock test. One point you remember. Don't worry about marks what you are getting in online mock test. Only worry about your practice, practice, practice. Very important caution. Very important caution. What is the important caution? Silly mistakes. So most of the students, I told so many times regarding it, सर हमको कॉन्सेप्ट मालूम था, फार्मूला मालूम था, अप्रोच मालूम था, सॉल्व करना पूरा हो गया, लास्ट में छोटा सिल्ली मिस्टेक हो गया, गलत हो गया क्वेश्चन. So because of not writing online test, because of not practicing more, because of exam tension and stress, ये silly mistakes हो रहा है. If you overcome silly mistakes in the exam, आपको सिर्फ खुद से 8 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा. Even the student who know the entire thing how to solve, same question we solved in the class, same question your notes is carrying, same question PYQ is carrying. बट एग्जाम का टेंशन में, एग्जाम का स्ट्रेस में थोड़ा थोड़ा सिल्ली मिस्टेक्स हो रहा है. सो अवॉइड सिल्ली मिस्टेक्स. हाउ टू ओवरकम? बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर टाइम्स and put a mistakes book. While you are practicing questions, you are doing some mistake and finally you identified. Write that mistake in the book. Yes, I have done this mistake, I don't want to repeat it. So ऐसा ऐड करने so many mistakes हो जाएगा. You remember those mistakes, don't repeat it in the final examination. So that silly mistakes is the main reason for getting 8 or 10 marks less in the final total score. So 23 में कौन सा silly mistakes आप कर दिया, 24 में रिपीटिशन मत होना चाहिए, और अपकमिंग ESC and SSC JEE में भी ये रिपीट मत होना चाहिए. So time management, the very important aspect we must focus. अभी से टाइम मैनेजमेंट दो चीज के लिए चाहिए हमको, दो चीज के लिए चाहिए. पहले प्रिपरेशन में चाहिए, दूसरा एग्जाम का बारे में चाहिए. एग्जाम का 3 घंटा टाइम मैनेजमेंट. एग्जाम का 3 घंटा में टाइम मैनेजमेंट बाय राइटिंग मोर एंड मोर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बाय राइटिंग और सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस. थोड़ा सा कम टाइम में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. पहले बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इट विल टेक 7 मिनट्स 8 मिनट्स. सेकंड टाइम 5 मिनट्स 6 मिनट्स. थर्ड टाइम 3 मिनट्स 4 मिनट्स. सो कम हो जाएगा ना. बार बार क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहिए टू फिनिश द सिलेबस, टू फिनिश द क्वेश्चन इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. देन प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसा हो जाएगा? आप एक टाइम टेबल बनाओ. I told you already, make a list of tough subjects, incomplete subjects. So these subjects have to be finished in this many months. So you make your timetable. हर एक स्टूडेंट को एक टाइम टेबल इंडिविजुअल भी होना चाहिए. आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपका मालूम हो जाएगा. So make a individual timetable. How many pending subjects are there? How many tough subjects are there? In how many days you need to finish? So stick on to your the timetable, whatever the timetable you made, stick on to it, work according to it. And आपका टाइम टेबल में ऑनलाइन मॉक टेस्ट को टाइम दे दो,
रिवीजन को भी टाइम दे दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने को भी टाइम दे दो, सेपरेटली टाइम स्लॉट्स अलॉट करो, so that you can make your journey for GATE 2024 and ESE 2024 more and more successful. I told you so many times, this is revision is the key for success. How many times you have revised, that many number of marks will be added up. Before going to final GATE or ESE 2024 examination, you must revise at least 4 times or 5 times. So students told me, sir, we don't have time to revise the concepts. We have finished the syllabus, completed the previous year question, completed online mock test also, but we don't have sufficient time for revision, so that we are unable to recall the concept. Concept recall नहीं हो गया एग्जाम टाइम में, क्यों? अरे गेट एग्जाम में पहले क्वेश्चन एनवायरमेंटल में आएगा, दूसरा क्वेश्चन जियोटेक से आएगा, तीसरा मैथ में आएगा। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम का गैप में ब्रेन स्विच ओवर होना चाहिए। इतना स्विच ओवर के लिए आपका ब्रेन मेमोरी स्टोरेज ज्यादा होना चाहिए। कब स्टोर हो जाएगा? बार बार रिवीजन होना चाहिए। व्हेन यू डू so many times of revision, then only your brain can store lot of formula, lot of concepts, and it will throw you whenever it is required in the examination hall. Recalling memory is active if you do number of times of revision. That recalling memory is a very important memory required for every GATE aspirant to remember the concept, to recall the concept while writing the examination. So make the revision is important key to success. So remember, first you need to finish whatever not completed for GATE 2023, those subjects, tough subjects, revise already completed subjects, solve PYQs, solve online test series. These 5 are important factors you need to focus here onwards towards your journey for GATE and ESE 2024. So stay focused guys, never give up in the journey of GATE and ESE, because GATE and ESE एक साथ में नहीं हो जाएगा, वन टाइम में टॉप रैंक, टॉप 10, टॉप 100 नहीं मिलेगा, because it is a all India level examination where the aspirants are working since 2 years, 2.5 years, so you are competing with those fellows. So आप पहले बार एग्जाम दिया, डिमोटिवेट मत करो, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, नेवर गिव अप। हमारा टारगेट 2024 में 100% सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से मौका देना पड़ेगा। रिगार्डिंग गेट एंड ESE 2024, we are going to launch new batches for GATE and ESE 2024, GATE and ESE 2025 with your favorite KPSR subject, fluid mechanics. I am going to start with fluid mechanics. This 17, February 17, 1:30 PM, we are going to start the new batch, FM, because you know FM is the basic required for all water related subjects. Basics of FM needed for geotechnical, basics of FM needed in hydrology irrigation, बेसिक्स ऑफ एफएम नीडेड इन ओपन चैनल फ्लो, बेसिक्स ऑफ एफएम नीडेड इन एनवायरमेंटल। कभी भी एफएम का बेसिक्स हमको आना चाहिए, सो दैट ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। सो योर गेट एंड ESE जर्नी विद द बेस्ट टीचर एंड द बेसिक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे हो जाएगा। शुरू करो दिस 17th February से। And now we are having up to 30% off. Today is the last day for up to 30% off and 2 months additional benefit. Means I will say in simple, आपको 14 month subscription मिल जाएगा 32,982 rupees. So 32,982 rupees में आपको 14 months subscription मिल रहा है। देखो 32,982 में 14 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा
20 मंथ्स आइकनिक मिलेगा 50 to 583 में. 20 मंथ्स आइकनिक सब्सक्रिप्शन 50 to 583 में मिल जाएगा. सो हमारा यूनिवर्सल कोड आपको मालूम था, केपी सिविल यूज करो. कम अंडर पर्सनल गाइडेंस ऑफ केपी सर. I am with you always, anytime to support you. So guys, please make your journey for GATE and ESC under the guidance of a perfect teacher. So आपका KP sir आपका साथ है कभी भी. I am with you to guide you properly. And we are launching classroom program in Delhi. Next March 2nd week में नया बैच शुरू कर रहे दिल्ली में. Our Unacademy top educators are going to teach in the Delhi. So we are with you always. So the classroom program comprises both online as well as offline. The student who take classroom program, he get 1 year plus subscription free. You can watch in online also, and additional discount offers are there for classroom programs also. Mostly 1 year you can get up to 80,000 rupees 1 year classroom program along with plus subscription, and whatever benefits of classroom program all are there for you. So do join our course using our universal code KP Civil. And always I am here to support you. And guys, if you want to join our Telegram channel, you know KP SAR Students is our Telegram channel. You can get updates regarding examination. You can get all motivational videos, my free classes and YouTube sessions anytime. And your KP SAR support. Let's crack it guys. We are here to support you anytime.